सोल को, आपकी आत्मा की, आपके अंदर, आप अपनी आत्मा के साथ किस तरह खुशी रह सकते हैं. इट इज एन एक्सरसाइज टू इंप्रूव योर soulful strength, which is so important for your physical strength. Professor Vinoy has kindly taken 2 sessions, and today is his third session. And people have been asking how to proceed further. Professor Vinoy needs no introduction. और हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, और आप लोग जैसे सभी सुधीक जन बोलते हैं, ज्ञानी लोग हैं सब लोग, लेकिन मैं अपनी साधना मतलब थ्योरेटिकल जो मैंने किया है, पढ़ा है, वो एक तरफ, लेकिन जो खुद का जो मेरा जो अभ्यास है उसके आधार पर मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि आप सबों की जो उम्र है और आप सबों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें, और जरूरत भी नहीं है उसमें, बहुत अधिक फिजिकल उछल कूद की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत, जो हम लोग बोलते हैं सोलर साइकिल यानी 40-42 दिन, आप इसको करके देखिए हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट होता है। हम लोग पूरे दिन में 22,500 एवरेज सांस लेते हैं। कितने सांसों के प्रति हम अवेयर हैं? नहीं तो कम से कम हम खाने के पहले, जिस समय हमारा पेट खाली है, थोड़ा सा पीठ को सीधा करके, आप कुर्सी पर भी बैठे बैठे, और ये जो है इसको थोड़ा करिए, तो सुबह भी और जब भी। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमारा जो पहला टॉक था वो ब्रेथ अवेयरनेस के बारे में था। ब्रेथ अवेयरनेस जो है उसमें 4 बातें थी। एक तो जो हम श्वास ले रहे हैं, जो एयर अंदर जा रही है उसको फील करना, उसको ट्रेस करना, और जो बाहर आ रही है तो गर्म है थोड़ी, उनके पास फील होती है, उसको बाहर निकल रही है। तो ये जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इसको ट्रेस करना, वन। दूसरा, थोड़ा जो है उसको थोड़ा सा जैसे सहारा देकर थोड़ा लंबा करो, प्यार से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई उछल कूद नहीं, जस्ट एक्सटेंड योर एक्सलेशन, जिससे वो थोड़ा कंप्लीट हो जाए और फेफड़े में हवा न के बराबर बचे, पूरा फेफड़ा खाली हो जाए। और तीसरा जो था वो था विजुअलाइजेशन, कि हम अमृत ले रहे हैं, हम हेल्थ ले रहे हैं, और हम गार्बेज निकाल रहे हैं, हम बीमारी निकाल रहे हैं। और चौथा जो था वो था स्माइल, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखना। चलो, क्या लाइफ है ना, उसको मूवी की तरह लाइफ को देखना, एंजॉय करना, क्या सीन है ना। मूवी में सब तरह के सीन होते हैं, खुशी के, दुख के, चलो ये सीन भी देखें। तो ये 4 हमने ब्रेथ अवेयरनेस के बारे में बातें की थी। दूसरा जो हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हमने जो दूसरा पॉइंट था, यानी सांस को थोड़ा, एक्सहेलेशन को थोड़ा एक्सटेंड करने का, इसी को हमने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया था, थोड़ा और इस पर हमने वर्क किया था कि सांस को अगर हम 3 भाग में बांटते हैं, अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो एब्डोमिनल, थोरेसिक एंड क्लेविकुलर, और अगर हम यौगिक टर्म देखें तो अधम श्वास, मध्यम श्वास एंड आदि श्वास। यानी जो पेट डायफ्राम के नीचे के जो से यूज करते हैं हम, जो चेस्ट के एक्सपेंशन से करते हैं, और जो नेक को और शोल्डर को एक्सपेंड करके जो लेते हैं, तो फेफड़े के ऊपर वाला भाग आदि श्वास, बीच का भाग मध्यम श्वास, नीचे का भाग जो है सो अधम श्वास। और क्योंकि नीचे के भाग में ही स्टेल एयर जमी रहती है, तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जो बेली ब्रीदिंग है, उसके बहुत उपयोग हो रहे हैं अभी। लोग ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में बेली ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, बहुत इस पर बातें हो रही हैं। इसका यही है कि जो लंग का बेस में जो स्टेल एयर हमारी बची रहती है, तो हम उसको निकाल लेते हैं, और फ्रेश एयर जाती है तो एक फ्रेशनेस फील होता है। तो एक्चुअली द सेकंड सेशन विच वाज कॉल्ड सेक्शनल ब्रीदिंग और विभागीय श्वसन इज नथिंग बट एक्सपैंडिंग द पॉइंट 2 ऑफ द ब्रेथ अवेयरनेस। अब ये जो दोनों हो गए, ये दोनों चीजें, यानी जो हमारा दोनों अभी तक हुआ है सेशन, इसमें जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनको हम अपने दिन के सभी श्वासों पर क्यों नहीं लगाएं?
आज का मेरा ये पॉइंट है कि केवल इसको एक बैठकर एक समय करने का नहीं, जब याद आए तो ब्रेथ के प्रति अवेयर हो जाओ, ब्रेथ को लंबा थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा स्माइल करेंगे, थोड़ा विजुलाइज करेंगे आप। मैंने सैकड़ों सैकड़ों पेशेंट्स का एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, इसके इतने फायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये जो दोनों सेशन थे हमारे, ये दोनों बेस थे। बेसिक मतलब ये बेसिक के भी बेसिक, मतलब सभी श्वास में ये अप्लाई होते हैं। आप टहल रहे हो तो, आप बैठे हो तो, आप चाय बना रहे हो तो आप इसको कर सकते हैं। खाना खाने के पहले भी 10-5 श्वास आप अवेयर हो जाओ। अब मैं जो 3 चीज बता रहा हूं वो आप सबके जानकारी में होगी, केवल लास्ट वाली थोड़ी जानकारी कम होगी, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये जो 3 चीज है, ये 3 आप सब कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई परहेज नहीं है। तो ब्रेथ अवेयरनेस और ब्रेथ एक्सपेंशन के पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए हमें थोड़ा सा ब्रेथ बैलेंसिंग, जो नाड़ी शुद्धि बोलते हैं जिसको सब लोग आप लोग जानते हैं, भ्रामरी, ब्रेथ वाइब्रेशन सब लोग जानते हैं आप, लास्ट वाला जो होता है, जो ओंकार है, नाद अनुसंधान, उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिसकंसेप्शन आ गया है, उसको कैसे हमको सुधार लेना है। तो ये दोनों दोनों बेस है, ये अलग से हमें नहीं करना है, ये तो हर श्वास में हमें इसको अप्लाई करना है, अवेयरनेस को भी और एक्सपेंशन को भी। और करना है जो क्या, तो नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम जिसको बहुत लोग बोलते हैं। तो क्या है कि आप, नासिका मुद्रा है ये, है ना, ये नासिका मुद्रा है। तो ये नासिका मुद्रा से, इससे राइट को अंगूठे से करते हैं, और ये जो, ये 2 उंगली ऐसे रहती है, जो ये 2 उंगली ऐसे रहती है, तो इससे ये जो रिंग फिंगर है, इससे लेफ्ट वाला। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ नहीं दबाना है, ऊपर में दबाना है, यहाँ पर कुशन है, हल्का सा, नाक जरा सा भी डिविएट नहीं होना चाहिए। आप जो है सो एकदम यहाँ पर देखिएगा, जहां बोन और सॉफ्ट टिश्यू है ना, आप टच कीजिए जरा सा, वो नाक बंद हो जाता है। देयर इज ए कुशन देयर एक्चुअली। सो एंड देयर शुड बी नो डिविएशन ऑफ द, तो यहाँ नासिका मुद्रा में से ये राइट साइड थंब, लेफ्ट साइड रिंग फिंगर, ये इस ऐसे इसको बंद करते हैं। तो आप सबको पता है, लेना है लेफ्ट से, छोड़ना है राइट से, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये बैलेंसिंग होता है, ये नाड़ी शुद्धि इसको बोलते हैं। अनुलोम विलोम बहुत लोग बोलते हैं, अनुलोम विलोम एक्चुअली एनी प्राणायाम विच यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इज अनुलोम विलोम। So there are two nostrils, left and right, and you breathe in and you breathe out. So there will be 6 combinations. Only left, only right, left and right, right and left, like that. So those are different names for them, like Surya Anulom Bilom, Chandra Anulom Bilom, Surya Bhedan Anulom Bilom, Chandra Bhedan Anulom Bilom, Sukhat Pranayam when you are taking from both nostrils, like we do in breath awareness. And the last one is Nari Shuddhi Anulom Bilom, means alternate nostril breathing. Left you are taking, right you are exhaling, left, right you are inhaling, left you are. खूब सॉफ्टली, अब चूंकि हम ब्रेथ अवेयरनेस और ब्रेथ एक्सपेंशन की सारी बातें जानते हैं, और हमने ये भी जान लिया है कि सहज योग है, न हठात, न बलात्, न जिद करना है, न जोड़ लगाना है। हर श्वास के प्रति वाहिगुरु ऊपर वाले को धन्यवाद देना है, और उसको उसको इतना अच्छे से सॉफ्टली लेना है। तो ये ब्रेथ बैलेंसिंग आप कर लीजिए, जितना मन करे आप 12 साइकिल कर लीजिए, 7 साइकिल्स, 12 साइकिल्स, जितना आपके पास समय है। खाने, पेट खाली होना चाहिए और स्पाइन सीधा होना चाहिए। तो हमारा जो ब्रेथ है, जो लाइफ फोर्स में 5 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट ब्रेथ अवेयरनेस है, दूसरा कंपोनेंट ब्रेथ एक्सपेंशन है, जो हमने डिटेल में बताया था। उसको यूज करके हम बाकी 3 कंपोनेंट करते हैं, यानी हर सांस, दिन भर की हर सांस भी करते हैं, लेकिन ये जो 3 प्रैक्टिस करेंगे इसमें करेंगे। तो एक हमारा जो है सो ये अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि वाला जो है, ये हमने बताया। ये आप जितना करना चाहें करें, खाने के पहले जरूर करें 5 बार, तब खाना खाएं, भोजन एक मंत्र करके तब भोजन करें खाली पेट, और सुबह में करें खाली पेट अपने मॉर्निंग एबुलेशन से निवृत्त होकर। चौथा जो कंपोनेंट है हमारा ब्रेथ का, जो लाइफ फोर्स है, वो भ्रामरी है ना। भ्रामरी में बहुत लोग
सन्मुखी मुद्रा ये सब बताते हैं, वो सब मैं कुछ नहीं, मेरा एक ही है, सहज। जितना रिलैक्स्ड, जितना आराम से रहो, है ना, और जादू का है, मिरेकल। तो भ्रामरी का एक मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूं। अंग्रेजी का एक वर्ड है INN, जो धर्मशाला या सराय के लिए यूज करते हैं, इन, INN। अभी क्या है कि आप अगर NN को आप अगर लंबा करोगे तो क्या वर्ड निकलता है, मैं बता रहा हूं। इन, इन, आप सब लोग INN, इन, जरा सा प्रोनाउंस आर्टिकुलेट कीजिए तो, इन। आप ध्यान दीजिएगा कि ओठ जरा सा खुला हुआ रहता है और जीभ तालू से सटी हुई जाती है। तो ये शुद्ध भ्रामरी का ये है। इन भ्रामरी, प्रॉपर भ्रामरी, लिप्स विल बी स्लाइटली अपार्ट, टंग विल बी टचिंग द पैलेट। और द रिवर्स, इफ द टंग इज नॉट टचिंग द पैलेट एंड lips are touching each other, then that is makar, the makar of the onkar. That is, the lips are touching very softly and the tongue is not touching the palate, is makar, the third component of onkar. So the difference between nakar, N, is the difference between the pituitary gland and the pineal gland. So the focal point of this vibration, the Brahmari, is the pituitary gland, and the secretions are serotonin, the peaceful hormone. While for the component of the Omkar, the Makar is the pineal gland point, about 1.5 inch behind the point of the pituitary gland. So these two have different uses, just for kind information. And just for your information, let me tell you that a lot of research has happened on this Brahmari. This is 148 megahertz vibration, and the nitric oxide production within the cells of the upper respiratory tract increases 14 times. Now there is no antibiotic stronger than nitric oxide, and that production inside the cell where the viruses are hiding, where no antibiotic usually reaches. So when you take azithromycin, it damages all your body, doesn't go where it needed. It can't go. It goes very less amount. So I am just sharing with you, not boasting, with all humility. I am saying for last 14 years, I have not had a single bout of cough and cold. You don't act like viruses don't come and visit me. They come. I have a stitching in the throat. I can feel the headache. I can feel the body ache. I sit down, and 27 cycles every hour I start doing Brahmari, empty stomach. In 4 to 6 hours, I'm okay. I request anyone, every one of you, try this 100% pakka. Because the viruses come inside in the COVID time, thousands of people benefited with my podcast, and they used to send photographs that after this Brahmari, that I used to recommend steam inhalation, and after the steam inhalation, you lie down on your belly, somebody should tap your back, and you should cough. They would send photographs of half a cup of dirty black sputum. They said, Dr. Sahab, किधर से इतना गंदा निकल रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आप में से जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, take a good steam inhaler and do the Brahmari, then take steam inhalation, then lie down on your belly, ask somebody to tap your back and pat your back nicely, and then you cough, and making your upper part of the body hanging from the bed. You see what all kachara will come out if you are having respiratory issues. So this is Brahmari, and a lot of research papers are there. Anybody interested? Rather, Pandita, have you shared the mail ID with every participant? My mail ID? No, sir. Oh, no, please, all the write-ups and the mail ID kindly share, so that any query they can mail me. Okay, please ensure that. Grewal sir, write-up share कर देंगे सबके साथ? जी जी जरूर जरूर। और ये भी हाँ, so kind of you. So now this is the Brahmari. So what were the components? The breath awareness and the breath expansion you use in
Nadi Shuddhi, that is called the alternate nostril breathing or breath balancing. Then you use it in the Brahmari, you do 12 cycles or 27 cycles. Now, last one is the Nad Anusandhan. Nad Anusandhan means inquiry. Nad means a short form of Brahmanad. So now, as you all know, that the Jupiter 9, which went beyond the solar system, so this information should be broadcasted all over the world, but it has come in the very few people. It has found a vibration of interstellar space also. Means where there is supposed to be nothing there, it has found a vibration which at a lower megahertz frequency, when converted to sound, it is our Omkar. So this is the which is pervading the whole creation, is called Brahmanad. This is not any religion, this is nothing. So I am just giving you some theoretical aspects of that. So as per the Western science, sound requires some medium like air or water. But our science, Vedic science, says that sound is of two types. One sound is that where you don't need any medium, that is called Anahat Nad. Now, when our most respected, and when the Guru Nanak Ji went to Jagannath Puri, and at the darshan, he spontaneously came up with the one bhajan which I hear almost every day. I have the recording. So Anhat, so he is the Anhat. He says that is the Anhat. So Anhat is what you speak or articulate in the mind. No, you are not producing any sound. Even the mantras have different power. The Anhat articulation of mantra has 1,000 times more power than Ahat. Ahat means when you are using a medium. Now, when you are using a medium, again it is of two types. It is one is awak, another is sawak. Means one is vocalized, another is non-vocalized. So three sounds are there which are non-vocalized. Even the most dumb person might be like you seeing some beggar or somebody. Ah, oh, these three sounds can be produced even when the vocal apparatus is not there. So the our Nad Brahm or Brahmanad consists of three sounds. Ah. Now this ah is the primordial sound. We have to practice this ah. Full open mouth, full relaxed body, produce the sound from the base of your belly, from deep within your belly. Like अगल बगल के लोग दौड़ के आ जाएं या पुलिस को खबर करने लगे. Like the buffaloes, they make the sound, the bellow sound it is called. Or like when the alap, the singers, they do the most bass alap. The thicker, the coarser it is the this I use for all the abdominal problems. So this is focal for the navel and around and the lower pelvis, etc. Now this very important. I write up will also be shared with all of you. It is one page, less than a page. All of you go through the write-up, but I am making it here explaining. You have to make the same sound, but you have to bring your lips very close. Don't make it touch, just close. I am producing the same sound. You hear what sound is coming out. So what is happening? I am not using the vocal cord. The sound I am producing from deep within my belly, I am modifying it with my lips. Bringing the lips closer, the sound becomes ooh. You can feel the vibration at the solar plexus. Anyone. Good for the cardiorespiratory aspects. Then just make your lips meet, touching each other very softly, but continue to produce the same sound from deep within your belly. Don't try to produce oo or ma. No. I am producing the same sound ah,
and it is coming as ma, because lips are just touching softly. Now the fourth component is that one third, one third, one third. So start with your lips open, fully mouth open. Slowly, slowly bring it closer and then make it touch softly. Try to keep it one third, one third, one third, like this. You do this, the Suddha Nad Brahm. Now, let me tell you, when you saying oh, you are using the vocal cord, om, not wrong. Swami Vivekananda says that we move from lower truth to higher truth, because everything is a permutation, combination of this Nad Brahm. And what is the proof? Proof is Harvard University did a research. That article I can share with all of you. It is one of the most important research, Harvard University. They made random people from the street to come and sit in their lab and do the japa of any word. You can take your girlfriend's name, your boyfriend's name, your dog's name. So somebody was doing the japa for half an hour of Mary, Mary, Mary. Some was doing John, John, John. Some were doing Buster, Simba, whatever. No Onkar even. And one of the highest supercomputers biological lab they used, they tracked the 28 genes expression, each gene expression in 200,000 cells. Imagine the computing power required. And they found that the inflammatory genes, which is the NF-kappa B, the lead gene for the inflammatory response, and other genes are there also. So their production expression, it is called gene expression, reduced by around 30%. Imagine what happens to your arthritis, what happens to your asthma, what happens to your diabetes, what happens to your prostatitis, what happens to your, whatever it is, the basic is the stress. The stress is causing the catecholamines and the other hormones. They are producing the inflammatory response. So it is the basic inflammatory response which is cause of everything. And forget about the beneficial effects of serotonin and dopamine and all that, which is the mental peace and the sleep. I got a patient or a very, very senior person from a very big IT company. He was on the verge of almost committing suicide. He started crying. I can't sleep. I just can't sleep. Somebody told me to go and meet you. I have come to you. Just by Nad Brahm, in 30 days, he started sleeping normally because the hormones are produced. You can measure the hormones. These are all science, technology, nothing to do with it. And actually, in the Arab countries, the same, they added now a bit because of their cultural region. So is also it is the same sound. Actually, it is mentioned in the original copies. But because you all are very senior and very knowledgeable people, I'm speaking this. I have worked in Saudi Arabia. Now, Saudi Arabia also, they are becoming very popular. I'm going there in a month or two to take few sessions there. So the point is that this and their the what they do is the adhan, and they do the Sanmukhi Mudra to a bit extent also. So the learned people will use these techniques, the nakar and the makar, for health. So the point I'm trying to make is that as with abandon, like you are the king of this whole earth, you own everything, all the planets, everything, like that, with that sense of abandon. And just try to bring the lips slowly closer. You see, you do this, you will not like to come out of it. You want to do it again and again and again. So much pleasure you will get. So much nice you will feel, I'm telling you, because this is the base of the creation. This is the substratum. Yasmin idam jagat asesam ases multa. Rajva bhujangam iva pratibhasitam vai. Shankaracharya
The last two lines of his Prata Smarnam is this: Rajva Bhujangam Eva Pratibhasitam Vai. This is the substratum on which, on your limitless form, this whole creation is existing. And now the physics also, Nobel Prize people are coming up with the same thing. There is a matrix, unknown matter, on which the whole manifested world is there. So just do this. If you can't do anything, just do this Nad Brahmanad. And if you don't want to do this, then you can take the name of your girlfriend or boyfriend also, no issue. But do this for 20, 30, 40 chants or whatever you want to chant. And just to take this forward, bhajan. Be abandoned, you have to sing with the bhajan. And group, it is fantastic. So come in groups. In Zimbabwe, I started this thing, and now every Friday, almost the whole Hindu community there, they come together and they have a satsang and they do the bhajan together. So try to make a small groups and do bhajan. It is so good for health because it is the extension of this Nad Brahm. It goes up and down, up and down. Good bhajan, you sing with that or with the sabad. Sabad, I have a lot of recordings. So sabad, you try to sing and be a part of it. So, and that is all I have to say. Breath awareness, breath expansion, breath balancing, breath vibration, and breath chanting. Good. Chanting. So now, Dr. Grewal, any Thank queries? you so much, Whatever. Professor Vinoy. ये आपका जो अभी तक जो आपने वर्ड्स यूज किए हैं वो शब्द नहीं है, वो म्यूजिक है. एंड लेट मी टेल एवरीबडी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू जानते हैं कि पिछले 10 साल से जितनी बीमारियां बढ़ी हैं, चाहे कैंसर है, हार्ट अटैक है, एस्थमा है, उन सब का जो बेस मूल स्टार्ट पॉइंट है वो इन्फ्लेमेशन है. इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन. कहीं ना कहीं हमारे सब शरीर के अंदर पेट्रोल की तरह धातु घूम रहे हैं. उनमें सिर्फ माचिस की तीली लगनी है और वो आग लग जाती है. हमारा शरीर बिल्कुल इसी तरह है. लेकिन अगर उसी पेट्रोल को आप ढक्कन लगा के रख दीजिए तो टैंकर यहां से अमेरिका चले जाते हैं बगैर आग लगे. तो पेट्रोल अपना नहीं खत्म कर सकते, आप माचिस की तीली को अपने शरीर से बाहर रख सकते हैं. रिमेंबर, जो प्रोफेसर बिनॉय ने आज आपको ज्ञान दिया है ये हर बीमारी के अंदर यूज होगा. क्यों? क्योंकि आजकल की जनरेशन की बीमारियां इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई हैं. हार्ट अटैक को इसलिए माना गया है कि आपकी जो आर्टरी है, जो पाइप है, उसकी जो सबसे अंदर की तह है, वो अगर उदाहरण दूं मैं तो इतनी स्मूथ है कि बर्फ की सिल्ली एक सिल्ली दूसरी पे लगाइए तो कितनी स्मूथली चलती है. हमारी जो आर्टरी का अंदर की तह है वो उससे 1000 गुना ज्यादा स्मूथ है. उसके ऊपर एक कंकर भी डालते हैं तो किस तरह बर्फ की सिल्ली कट जाती है. उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जब आग लगती है तो इन्फ्लेमेशन जब होती है तो आर्टरी का अंदर का हिस्सा कहीं ना कहीं टूट जाता है और वहीं से सारी कहानी शुरू होती है. Therefore, there is a scientific basis कि अगर आपने अपने शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कंट्रोल में रखा तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. प्रोफेसर विनॉय, आई थिंक if I've summed up the basis of your ज्ञान, ठीक है. you see what is important, जब जो प्रोफेसर विनॉय कह रहे हैं, बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज होती है वो सरल भी होती है. अच्छी चीज सरल होती है लेकिन अच्छी चीज छुप जल्दी जाती है. बार बार कहा जा रहा है कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है. आई वांट टू रिपीट बिकॉज मुझे 2-3 मेरे फोन पे मैसेजेस आए हैं. प्रोफेसर विनॉय, वन क्लैरिफिकेशन, जो आपने ब्रेथ एज ए लाइफ फोर्स बताया वो वर्सेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो योगा की हैं,
दोनों अलग हैं या सेम है? नहीं नहीं, थोड़ी अलग हैं। देखिए, ब्रेथ ऐसा है कि इट इज एन स्पेक्ट्रम. There is a breathing practices, then there are Sukshma Vyayam, there are then Sithlikaran and Surya Namaskar and Asana. The basic difference is only the degree of awareness and your comfort, your you can say relaxed state of your relaxation. Like practices are like best example. Will give the breathing practice one example. The best example is the cat and tiger. So you come on your all your fours, your hand and your knees, and then what a cat will do like this, a tiger will do like this. So Marjaryasan and Vyagrasan. Combination of this tiger, and you see, if all of you who have seen a cat in the morning when they get up, they will do that. So that is the best breathing. You inhale when you are doing the tiger posture. You exhale when you are doing the cat posture because you are Sorry, constricting मेरा your lungs. मेरा मेरा Yeah. क्लैरिफिकेशन एक और था कि Hmm. जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक्सक्लूसिवली लंग्स के इंप्रूवमेंट के लिए है, whereas जो आप ब्रेथ एज ए लाइफ फोर्स बता रहे हैं, इट इज नॉट ओनली ब्रीदिंग लंग इंप्रूवमेंट, इट मे इंप्रूव बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल हार्मोनल चेंज ऑफ योर बॉडी. Correct. दोनों में Yes. ये अंतर है कि जो ब्रेथ एज ए लाइफ फोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति को बदलने की कोशिश है. Using the breath. Using the breath. Yes. यूजिंग द ब्रेथ. You are very right. We are using breath as a tool actually दैट्स राइट, for दैट्स राइट, for the highest level of achieving calmness of mind. दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज. This is सो so ये जो पर्पस है, इसका केवल सांस अच्छा करना नहीं है. द पर्पस ऑफ दिस इज टू इंप्रूव योर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जो कि हम देख रहे हैं आजकल की तारीख में जो कमी है. एंड देन एक वर्ड प्रोफेसर विनोय बहुत अच्छा यूज कर रहे थे, ग्रैटिट्यूड. आप अपनी एक्सरसाइज के दौरान ग्रैटिट्यूड का जो को डेवलप करना अपने अंदर इज सच ए हाईली हाई लेवल ऑफ लिविंग. टू लिव विद ग्रैटिट्यूड, अपने अपनी भक्ति को में बिलीव करके शुक्राना करना, उससे बड़ा लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ हो ही नहीं सकता. देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इनको बीमारियों के साथ कैसे जोड़ रहे हैं. इफ somebody has a heart attack, there is called rehabilitation. हार्ट सर्जरी के बाद आपको ना कार्डियक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है. वो केवल आपकी फिजिकल रिहैबिलिटेशन करवाएंगे, आपके मसल को ठीक करेंगे, आपको स्टिफनेस कम करेंगे. व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल रिहैबिलिटेशन? आपने सर्जरी की या हार्ट अटैक एक्सपीरियंस जो है, लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस. इसीलिए अमेरिका में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने हिस्सा लिया, पोस्ट ट्रॉमा डिप्रेशन was a big challenge in the defense services. और वो कैसे ठीक हुए? केवल मेडिटेशन से. So remember, the goal of breath as a life force is not to improve your lung status, but to improve your quality of life through spiritual health, spiritual strength. Yeah. Any queries are there, sir? So now I invite anybody for their comments or questions. Jasbir Chatterjee, of course. Jasbir Chatterjee is one of the highest level of chanting that he does, and he's a big guide. Now I invite anybody for any questions. Ji Gupta ji, please go ahead. I have one. जी गुप्ता जी, आप उस पे हैं, म्यूट पे हैं गुप्ता जी. Shraddha, all these breathing exercises should preferably be done on empty stomach. And at the same time, we say that it can be done at any point of time during the day. You know, so it means even on full stomach or even on light stomach, I can do it.
by empty stomach, I will further clarify from Professor Binoy. How many hours of empty stomach is required before we do the? Yeah. When we say that any time of the day, then before every meal Yeah, is also before like you are doing in the morning Right, and right. noon and before the that, we yeah. can. See, after meal, you can breath awareness. There is no restriction because breath awareness is a completely mind thing, and you can. And I always request that you should be aware of more and more breath during the whole day than as possible. While eating, also you can be aware of your breath. While walking, you can be aware of your breath. It will do a lot of good Very well. That's if you are aware of your breath. So you don't speak during eating. So right. you are quiet and all that. But other things, when you are doing something, it's always better to be empty stomach. Maybe That's it. once in. That's right. Yeah. But Ranjit Singh ji, biggest, आपका but the biggest point which I try to make is that there are no contraindications in any five of them. You had a heart Right. attack today, next day morning you can do any one of you these. can start. So I have selected only those. So I have not discussed Kapal Bhati, which is a very powerful tool, but it cannot be done by everybody. So I have not discussed that. I have not discussed Bhastrika. There are very powerful tools, very useful in certain conditions. But we are here come up with only 5 techniques which are 100% side effect free, can be done next day By of a anybody. By heart anybody. attack. Yeah. Ranjit Singh ji, आप Ranjit Singh ji, हाँ जी, please go ahead. हाँ जी सर जी, विनोद सर ने जो भी समझाया है बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। मैं योगा भी करता हूँ बैडमिंटन के साथ साथ में, और हमें इससे और ज़्यादा बेनिफिट होएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो विनोद सर कह रहे थे कि गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पे शब्द गायन किया था, वो वहाँ पे उन्होंने आरती शब्द का गायन किया था। गगन में हाँ थाल आरती रव चंद दीपक बने, या तारका हाँ मंडल जन गन होती। या हाँ जी, आरती है भाई Very वही nice. वही Very nice. हाँ हाँ जी। हाँ Very nice. तो थैंक यू सर, थैंक यू माधुरी सो मच। शर्मा जी, माधुरी शर्मा जी. Yes, doctor, this is Madhuri Sharma here. Actually, my specific query है कि I had a head injury almost 8 months back. After that, I mean, I'm suffering from a lot of insomnia issues, and I'm on Wave and sleeping tablets. But वो somehow or the other, I'm not getting back to my old self, and मुझे थोड़ा थोड़ा भ्रमरी से फर्क ऐसा लगता है, मुझे yawning शुरू होती है. But can I do it for more number of times, and is it safe to do it? Very yeah nice. ma'am, I my mail ID is there. Okay, sir. Okay. So you mail me, Okay. and I have a specific sleep optimization. Sleep is a big issue nowadays, Yeah. and also the people who have sleep issues also don't have time. They said I don't have even 1 minute to do yoga. So what I do that I convert the sleeping period in itself into an yoga. So I will Okay. try to do that for you. Thank you so So much. that is I Nidra think, Yoga, and we will I achieve that. think first answer to your question from Professor Vinoy, if I can jut in, is yes, you can be helped by the breath life force system. Okay. Okay. I Okay. think that is the first part of the answer. Okay. And to get the detail of that, we will specifically arrange your session with Professor Vinoy. Okay. Thank you so So much. nice, so nice of you. Thank you. Yeah, anybody else, please? If any questions or yes, Shravan. Yes, Shravan, please go ahead. So, sir, thank you very much. I had just query regarding the Om chanting. Like Please. what I could get from Om chanting, you mean to say A, O, Ma, one third, one third, one third. I do agree. Okay. But some people, because I have gone to yoga courses from Moraji Desai Institute also, and what I have felt, some people say O, Bada U, and then you put Ma over it. So which sounds as a two-stage thing. So could you clarify Om should be A, O, Ma, or Om, something like that? Yeah. Very nice. So Very fine. nice, Shravan. Very nice. See, there is no issue in that. The point is that usually I speak something after very deep research and all aspects and talking to really people who are realized. The point here is that the sounds are to be non-vocal. That is the first criteria of Nag Brahma. And here you don't have to make any sound actually.
The sound which is coming from within the belly is nothing but ah. Okay. The dumbest of the dumb person can make that sound. Ah, even the cows and the buffaloes can make that sound. Ah. And you modify that sound just by bringing the lips slowly together. So you don't bother that what sound you are making. You just practice. You continue to make that sound which is the ah, and it is ah. It is not ah. Or your vocal apparatus will come into play. You can yourself practice. Outside. If you fully open your mouth, fully open yourself, fully open your mind, fully open your approach to life, the sound which will come out is ah. And why that sound is being coming, why that sound is coming out, slowly you bring the lips closer and make them softly touch each other. The sound converts into oo and ma. Now, what the people are saying, they're saying that 3 times oh and all that are a different permutation combination. They are lesser truth. So I am not saying that they are not true. I told that even you say John, 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 Mary, 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 you will benefit. Just you have to be relaxed and you have to be like do it regularly every day, same time and same place and with empty stomach and all that. It will help you. That is important. But the Nad Brahm, I am just making it more Sudra. And regarding people, see, in India, people consider only those doctors knowledgeable whose practice is very big or they earn a lot of money, or like you don't get appointment for them, you consider it a good doctor. So making money and coming to my SI Institute, so I will not speak anything. I will not speak about other institutions. That's Yeah. I think what is important Professor Vinoy, आपने कहा कि a deaf and dumb person also takes out a voice. वो आवाज निकालते हैं. That is kindly clarify, because that voice is not coming from the vocal. It also comes from vocal cord, but no. What is no, it doesn't come from. No, it doesn't come from vocal cord. See, the vocal cord is completely non-functional. Non-functional. That sound comes from below, from the lung, from the belly. That is what is important. That is what is important. Yeah. No. Again, you are constricting your throat. Open yourself. Open your mind. Open your body, and uninhibited. You extend your neck. Okay, like this. And open your mouth fully. So this is like in one line, your respiratory tract. The sound will come. It will be very deep sound. Just you bring the lips together, closer. You will see the effect on your body, and you will yourself see. I say this again and again. Yoga is an experiential science. It is not a academic science. So you practice it and you see and share your comments. My mail ID has been shared. I think what's important. देखिए, मजबूरी नहीं है, चॉइस है. मजबूरी नहीं है, चॉइस है. और इस चॉइस में साइंस है. गहराई से सुनिए मैंने क्या बोला. मजबूरी नहीं है, चॉइस है, और इस चॉइस में साइंस है, एविडेंस है. वो अपने एक्सपीरियंस नहीं कह रहे, साइंस की बेसिस पे कह रहे हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ही इज अगेन एंड अगेन सेइंग, प्लीज ट्राई इट, see how you feel, share your experience.